गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है यूजीसीज न्यू नॉर्म्स फॉर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। गवर्नेंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो फ्यूचर एकेडमिक विजन को ध्यान में रखते हुए और यूजीसी जो है कमर्शियल इंटरेस्ट को कम करने के लिए उन्होंने जो है कुछ मोडेलिटीज़ जो हैं वो स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए निकाली हैं, नोटिफाई की हैं एक्चुअली। तो यूजीसी ने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को अपने ऑफ कैंपस सेंटर्स लगाने के लिए अलाउ कर दिया है और कुछ उसके लिए रूल्स अनाउंस किए गए हैं। तो स्टेट यूनिवर्सिटी जो है अपने ऑफ कैंपस सेंटर्स जो हैं किसी भी पार्ट ऑफ द स्टेट में ओपन कर सकती हैं अगर उनको जो है इस्टेब्लिश हुए और ऑपरेशनलाइज हुए 5 साल मिनिमम हो चुके हैं और उनके पास जो है NAAC की अगर एक्रेडिटेशन है तो भी जो है ये भी एक क्राइटेरिया उसमें होगा। ठीक है। तो मिनिमम स्टाफ का क्राइटेरिया, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स का क्राइटेरिया फुलफिल करने के बाद जो है वो अपने ऑफ कैंपस सेंटर्स ओपन कर सकती हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। और उनको जो भी रिक्विजिट स्टेचुटरी और रेगुलेटरी बॉडीज़ का अप्रूवल चाहिए होता है वो भी लेना पड़ेगा। 10 लाख रुपए एस्टेब्लिशमेंट फ़ी देनी पड़ेगी यूजीसी को। और यूजीसी के पास राइट होगा कि वो इंस्पेक्शंस कर सके और प्यूनिटिव मेशर ले सके अगेंस्ट यूनिवर्सिटीज़ अगर कुछ इरेगुलरिटीज़ या कंप्लेंट्स हैं तो। यूजीसी जो है वो यूनिवर्सिटी के ऑफ कैंपस सेंटर को क्लोजर करने का भी जो है ऑर्डर दे सकती है अगर कोई भी रेगुलेशन वायलेट की जाती है। उस केस में जो है उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को अपने मेन कैंपस में स्टूडेंट्स को शिफ्ट करने की फैसिलिटी देनी होगी। तो यूजीसी है क्या? एक स्टेचुटरी बॉडी जो कि यूजीसी एक्ट के अंदर बनाई गई 1956 में। तो इसका ये रिस्पॉन्सिबल है कोऑर्डिनेशन, डिटर्मिनेशन और मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ हायर एजुकेशन के लिए। और ये रिकॉग्निशन देती है यूनिवर्सिटीज़ को, इंडिया में फंड्स डिसबर्स करती है उन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के अंडर आती है। तो इसके अगर हम मैंडेट देखें तो स्टैंडर्ड्स ऑफ टीचिंग, एग्जामिनेशन, रिसर्च इन यूनिवर्सिटीज़ डिटर्मिन और मेंटेन करना, रेगुलेशंस फ्रेम करना मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन के, वाइटल लिंक बनना यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को एडवाइस करना ऑन मेजर्स जो भी नेसेसरी हैं यूनिवर्सिटी एजुकेशन की इम्प्रूवमेंट के लिए। ठीक है। तो ऑफ कोर्स इन रेगुलेशंस के बाद स्टूडेंट्स को बेनिफिशियल होगा कई तरह के ऑप्शंस में से चूज़ करने को। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सेकंड थॉमस शोल। ये टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक रीसेंट इंसिडेंट हुआ है सेकंड थॉमस शोल एरिया में, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि एक फ्लैश पॉइंट ना बन जाए ये एरिया फिलीपींस और चाइना के बीच में। तो सेकंड थॉमस शोल जो है एक सबमर्ज्ड रीफ है स्प्रेटली आइलैंड्स ऑफ साउथ चाइना सी में। फिलीपींस ने इसका पोजेशन 1990s में लिया था, तब से वहाँ पर उनकी ट्रूप प्रेजेंस है, लेकिन ऑफ कोर्स इसको चाइना क्लेम करता है। ठीक है। और ये लगभग फिलीपीन आइलैंड जो पालावान का है वहाँ से 200 किलोमीटर दूर है। और फिलीपींस ने चाइना के अगेंस्ट परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में केस भी किया था 2013 में, जो कि उनके फेवर में जिसकी जजमेंट आई थी। लेकिन 2016 में जब जजमेंट आई तो चाइना ने उस जजमेंट को ही रिजेक्ट कर दिया। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कोर इन्फ्लेशन। इकोनॉमी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो इकोनॉमिस्ट के हिसाब से कोर इन्फ्लेशन जो है वो कम ही रहेगी, लगभग 3% के आसपास, बिकॉज वीक रूरल डिमांड है, हाउसिंग इन्फ्लेशन में सॉफ्टनेस है, लोअर इनपुट कॉस्ट प्रेशर्स हैं। ठीक है। तो कोर इन्फ्लेशन क्या होती है? चेंज इन कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिसमें कि हम फूड और एनर्जी के प्राइजेस को इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि वो तो बहुत ही जो है वॉलेटाइल होते हैं, बहुत फ्लक्चुएट करते हैं। तो कोर इन्फ्लेशन जो है वो लॉन्ग टर्म ट्रेंड दिखाती है प्राइस लेवल का। ठीक है। तो राइजिंग प्राइसेस का कंज्यूमर इनकम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो उसको हम कोर इन्फ्लेशन से देखते हैं। बहुत से सेंट्रल बैंक जो हैं वो इसी कोर इन्फ्लेशन के बेसिस पर ही जो है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करते हैं। जैसे कि जब भी कोर इन्फ्लेशन राइज होगी तो सेंट्रल बैंक जो है अपने की पॉलिसी रेट्स को इंक्रीज़ कर देंगे। ठीक है, ताकि लिक्विडिटी को कम किया जा सके। अब हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या है? ये होती है असली जो टोटल इन्फ्लेशन इकोनॉमी में, जिसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं इंडिया में। ठीक है। तो इसमें जो फूड और एनर्जी प्राइसेस होते हैं उनको भी हम कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं याओंडे डेक्लेरेशन। ये टॉपिक जो है सोशल इश्यूज़ के लिए और इंटरनेशनल रिलेशंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो हेल्थ मिनिस्टर्स हैं अफ्रीकन कंट्रीज़ के, जहाँ पर हाईएस्ट बर्डन ऑफ मलेरिया है, उन्होंने याओंडे डेक्लेरेशन साइन किया है रिसेंटली। ऑब्जेक्टिव ये है कि मलेरिया डेथ्स को जो है एंड किया जा सके।
तो हेल्थ मिनिस्टर जो है 11 अफ्रीकन कंट्रीज़ के, जहाँ पर हाईएस्ट बर्डन है इस मलेरिया का, और उन्होंने ये मलेरिया डिसीज़ से डील करने के लिए ये डेक्लेरेशन साइन किया है और इसको को होस्ट किया है डब्ल्यूएचओ ने और गवर्नमेंट ऑफ कैमरून ने। तो इसमें उन्होंने कमिट किया है कि वो स्ट्रॉन्गर लीडरशिप दिखाएंगे, डोमेस्टिक फंडिंग इंक्रीज़ करेंगे, डेटा टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करेंगे, लेटेस्ट टेक्निकल गाइडेंस जो है वो फॉलो करेंगे मलेरिया कंट्रोल और एलिमिनेशन में, और मलेरिया कंट्रोल एफर्ट्स को भी एनहेंस करेंगे। तो ऑफ कोर्स हेल्थ सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स को भी जो है प्लेज किया गया है इसी डेक्लेरेशन में। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं समुद्रयान मिशन। ये टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशंस टेक्नोलॉजी ने उन्होंने की टेस्ट कंप्लीट कर लिया है इंडिया का फर्स्ट मैंड सबमरीन मिशन, जिसको हम सबमर्सिबल मिशन, जिसको हम समुद्रयान कह रहे हैं, उसके जो है लॉन्च करने के लिए। तो ऑफ कोर्स 2025 के शायद एंड तक इसको लॉन्च किया जाएगा इस मिशन को। तो ये बेसिकली एक मिशन है डीप ओशन को एक्सप्लोर करने का। तो एक सेल्फ प्रोपेल्ड मैंड सबमर्सिबल जो है वो डेवलप की जाएगी, जो कि 3 ह्यूमन बींग्स को एक वाटर डेप्थ ऑफ 6000 मीटर्स तक लेकर जाएगी ओशन में। ये डिज़ाइन किया गया है ताकि स्टडी की जा सके डीप ओशन रिसोर्सेज की और बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट्स जो है कंडक्ट की जा सके। ये प्रोजेक्ट जो है लार्जर डीप ओशन मिशन का पार्ट है और इसकी नोडल मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज है। तो मत्स्य 6000 ये क्या है? ये वो मैन सबमर्सिबल व्हीकल है जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ने बनाया है चेन्नई द्वारा। ये जो है डेवलप किया गया है अंडर समुद्रयान मिशन, और इसको जो है यूज़ करते हुए ह्यूमंस को डीप ओशन में लेके जाया जाएगा। इसकी एंड्योरेंस लगभग 12 घंटे की है ऑपरेशनली अगर हम देखें, लेकिन 96 आवर्स तक इसको इन केस ऑफ इमरजेंसी यूज़ किया जा सकता है अंडर डीप ओशन। इसमें साइंटिफिक पर्सोनल जो हैं वो अनएक्सप्लोर्ड डीप सी एरियाज़ को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। और कहा जाता है कि ये 2024 से 25, मतलब खासकर तो कहा जा रहा है कि 25 के एंड में ये मिशन लॉन्च किया जाएगा। और इसकी वजह से ही इंडिया जो है वन अमंग द 6 कंट्रीज़ बनेगा, यूएस, रशिया, जापान, फ्रांस और चाइना के बाद, जो कि एक पायलटेड क्रू जो है 5000 मीटर से नीचे डीप ओशन में लेकर गया हो। तो डीप ओशन मिशन जो है ब्लू इकोनॉमी इनिशिएटिव्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सपोर्ट करने का मिशन है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज की। तो ये एक हाई लेवल मल्टी मिनिस्टेरियल मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोग्राम है ताकि डीप सी लिविंग और नॉन लिविंग रिसोर्सेज के इंडियन ओशन में के बारे में जानकारी ली जा सके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। एनवायरनमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी ने एक मीटिंग की है रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स के साथ मिलके कि कैसे जो है स्पेशलाइज सिलेंडर्स जो हैं जो ग्रीन हाइड्रोजन स्टोरेज के लिए वो डेवलप किए जा सकते हैं। तो ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर से बनती है। तो ऑफ कोर्स इसका यूज़ करते हुए हम डीकार्बनाइज कर सकते हैं बहुत सारे सेक्टर्स को, कार्बन एमिशंस को रिड्यूस कर सकते हैं, एनर्जी इंडिपेंडेंस अचीव कर सकते हैं। तो इसकी प्रोडक्शन से रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, इसकी प्रोडक्शन जो है रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे कि सोलर, विंड और हाइड्रो पावर से की जाती है। ठीक है, और ये ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल्स को रिप्लेस कर सकता है ट्रांसपोर्टेशन और इंडस्ट्री सेक्टर में। ठीक है, तो ऑफ कोर्स हाइड्रोजन को सिलेंडर्स में स्टोर किया जाएगा बहुत हाई प्रेशर में, और जो कि 5000 से 10,000 PSI तक का हो सकता है। और एप्लीकेशंस ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन अगर हम देखें तो फ्यूल सेल्स में इसका इस्तेमाल करके केमिकल और फर्टिलाइजर्स बनाना, व्हीकल्स को पावर करना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, ये सब जो है इसके एप्लीकेशन है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। इकोनॉमी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। पीएम मोदी जो है उन्होंने भी रिसेंटली 8000 करोड़ के बैंक लोन्स जो है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को सब्सिडाइज इंटरेस्ट रेट पर दिए हैं। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है बैंक लिंकेज प्रोग्राम नाबार्ड ने 1992 में लॉन्च किया, वर्ल्ड का लार्जेस्ट माइक्रो फाइनेंस प्रोजेक्ट है। एक कॉस्ट इफेक्टिव मैकेनिज्म है फाइनेंशियल सर्विसेज देने के लिए अनरीच्ड और अंडर सर्व्ड पुअर हाउस होल्ड्स को। ओके, सो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होते हैं? स्मॉल इनफॉर्मल और वॉलंटरी एसोसिएशंस ऑफ इंडिविजुअल्स जो इकट्ठे होते हैं अपने कॉमन सोशल और इकोनॉमिक नीड्स को पूरा करने के लिए। तो इसका फोकस रहता है कि मेंबर्स को एम्पावर किया जा सके, खासकर विमेन को। पंचसूत्र ये फॉलो करते हैं जिसमें कि होता है कि रेगुलर ग्रुप मीटिंग्स होंगी, सेविंग्स रहेंगी ग्रुप्स के अंदर, और इंटरनल लैंडिंग की जाएगी, टाइमली रीपेमेंट ऑफ लोन इंश्योर किया जाएगा, मेंटेनेंस की जाएगी प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, एंड सो ऑन। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एक्सरसाइज कटलास एक्सप्रेस। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो INS तीर जो कि लीड शिप है फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन की, उन्होंने एक्सरसाइज कटलास एक्सप्रेस जो है जो पोर्ट विक्टोरिया सेशल्स में हो रही है उसमें पार्टिसिपेट किया है।
तो जो ये एक्सरसाइज है ये ईस्ट अफ्रीकन कोस्टल रीजन्स और वेस्ट इंडियन ओशन में कंडक्ट की जाती है मलाइन इन्फ्लुएंसेस, एग्रेशन और एक्टिविटी को काउंटर करने के लिए। तो एक प्रीमियर मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज है जो कि यूएस जिसको स्पॉन्सर करता है, यूएस का अफ्रीका कमांड और यूएस नेवल फोर्सेस यूरोप अफ्रीका यूएस की सिक्स्थ फ्लीट इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, लीड करती हैं। तो कई तरह की मैरीटाइम फोर्सेस ईस्ट अफ्रीका से, वेस्ट इंडियन ओशन नेशन से, यूरोप से, नॉर्थ अमेरिका से, सेवरल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। इंडियन नेवी जो है इसमें एक्टिवली एंगेज करती है और 16 फॉरेन फ्रेंडली कंट्रीज़ भी इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। इंडियन नेवी इसमें 2019 से पार्टिसिपेट कर रही है, ठीक है। So now let us see all these topics in English. So the first topic is UGC's new norms for private universities. This topic is important for your governance section. So in line with its future academic vision, instead of pursuing commercial interests, UGC has recently notified the modalities for state private universities. So UGC has recently allowed private universities to establish their off-campus centers and announced rules for the same. So in a recent meeting which was held by UGC, it has decided to allow state private universities to open off-campus centers in any state in the country, provided if they have a minimum 5 years of their establishment and operations, and they have received accreditation from National Assessment and Accreditation Council. Okay, so the private universities which want to establish such centers will have to meet the minimum staff, infrastructure, and financial requirements set by the Commission. Universities will have to provide approvals from the statutory and regulatory bodies. Universities will have to pay 10 lakh rupees for establishment fees to UGC. Commission will have the right to carry out inspections and take punitive measures against the university in cases of irregularities and complaints. UGC may also order closure of universities off-campus center if it breaches any of the regulations, and in case the off-campus center is ordered to be closed, the university will have to facilitate shifting students to their main campus. Okay. So, what is UGC? UGC is the statutory body under the provision of UGC Act of 1956, and it is responsible for coordination, determination, and maintenance of standards of higher education in India. And it also provides recognition to universities in India, and it also disperses funds to such recognized universities and colleges. The mandate includes determining and maintaining standards of teaching, examination, and research in universities, framing regulations on minimum standards of education, serving as a vital link between union and state governments, advising the state and central governments on measures necessary for the improvement of university education. So, if we can conclude, we can see that academic experts are saying that this decision would be beneficial for the students as they will get more options to choose from for their education. So the next topic is Second Thomas Shoal. This topic is important for your international relations. So a recent incident in the Second Thomas Shoal area has renewed global interest in the flashpoint between Philippines and China. So the Second Thomas Shoal is a submerged reef located in the Spratly Islands of the South China Sea. The Philippines first took possession of this Second Thomas Shoal in late 1990s, and it continues to maintain its presence there. So the Second Thomas Shoal lies about 200 kilometers from the Philippine island of Palawan, and China has been claiming sovereignty over most of the South China Sea, including this shoal. Uh, in 2013, Philippines had filed a case against China with the Permanent Court of Arbitration in The Hague, and it challenged the legality of China's claims and activities in South China Sea. Okay, so the court ruled in favor of Philippines in 2016, but China rejected this judgment. So the next topic is core inflation. This topic is important for your economy section. So as per economists, core inflation is likely to remain low, around 3% in the near term, and it is being owed to weak rural demand, softness in housing inflation, and lower input cost pressures. So core inflation is the change in the cost of goods and services, excluding the price variations in seasonal elements like those related to food and energy. Food and energy prices are exempt from this calculation because their prices can be too volatile or fluctuate wildly. And core inflation basically represents the long-term trend and the price level, and it is used to determine the impact of rising prices on consumer income. So to deal with such situations, many central banks use measures of core inflation that are designed to filter transitory price movements, and central banks
follow this core inflation because it reflects the demand side pressure on the economy. Whenever the core inflation rises, central banks increase their key policy rates to suck excess liquidity from the market and vice versa, of course. So, what is headline inflation? It is the actual total inflation in an economy. So, it is the raw inflation, which gets reported through the consumer price index. And apart from the core inflation, it also includes commodities like food and energy and their inflation also. Okay. So the next topic is Yonde Declaration. This topic is important for your social issues. So ministers of health and health from African countries with the highest burden of malaria have recently signed this Yonde Declaration with the objective of ending malaria deaths. So it was signed by health ministers of 11 African countries who are having the highest burden of malaria. They have committed to end deaths from malaria disease. So it was signed at the Yonde conference, which was co-hosted by World Health Organization and the government of Cameroon. They have committed to provide stronger leadership and increase domestic funding for malaria control programs. They also committed to ensure further investment in data technology, to apply the latest technical guidance in malaria control and elimination, and to enhance malaria control efforts at the national and subnational levels. Ministers have further pledged to increase health sector investments as well. Okay. So the next topic is Samudrayan mission. This topic is important for your science and tech section. So National Institute of Ocean Technology has completed a key test for India's first manned submersible mission called Samudrayan. It is a first manned mission to explore the deep ocean. It is aimed to develop a self-propelled manned submersible to carry three human beings to a water depth of 6,000 meters in the ocean. It is designed to study the deep ocean resources and conduct biodiversity assessments as well. So this project is part of the larger deep ocean mission, and the nodal ministry is Ministry of Earth Sciences. Okay. So what is Matsya 6000? It is a manned submersible vehicle which has been developed by National Institute of Ocean Technology, Chennai, and it was developed under the Samudrayan mission to facilitate humans in the deep ocean in exploring mineral resources. It has an endurance of 12 hours of operational period and 96 hours in case of emergency. So basically, it will allow scientific personnel to observe and understand unexplored deep sea areas by direct interventions. So it is expected to be launched by the end of 2025, and it would make India one among the six countries, US, Russia, Japan, France, and China, to have piloted a crew under sea expedition beyond 5,000 meters. Okay, so what is Deep Ocean Mission? It is a mission mode project to support the blue economy initiatives of Government of India, and it has been launched as a central sector scheme of Ministry of Earth Sciences. But of course, it is a high-level, multi-ministerial, multidisciplinary program for a better understanding of the deep sea living and non-living resources of our Indian Ocean. So the next topic is green hydrogen. This topic is important for your environment section. So Ministry of New and Renewable Resources has convened a meeting with relevant stakeholders to discuss the development of specialized cylinders for green hydrogen storage. So green hydrogen is produced using electrolysis of water, and it has the potential to decarbonize several sectors, reduce carbon emissions, and achieve energy independence. So its production is done using renewable sources, energy sources like solar, wind, and hydropower, and it can replace traditional fossil fuels in transportation and industry also. So hydrogen is stored in cylinders at very high pressure, generally between the 5,000 and 10,000 psi. So green hydrogen has numerous applications, and it can be used in fuel cells for the production of chemicals and fertilizers, as well as powering of vehicles and providing electricity. Okay, using the microgrids. So the next topic is self-help groups. This topic is important for your economy section. PM Modi has disbursed around 8,000 crore rupees as bank loans to self-help groups at subsidized interest rate through the bank linkage camps set up by banks in each district. So this self-help group bank linkage program was launched by NABARD in 1992 and has blossomed into the world's largest microfinance project. It is a cost-effective mechanism for providing financial services to the unreached and underserved poor households. Okay, so what are these self-help groups? So they are small, informal, and voluntary associations of individuals who have come together to address common social and economic problems. So they primarily focus on empowering their members, particularly women. So they follow Panchasutra, which is conducting of regular group meetings, regular savings within the group, internal lending based on the demand of members, timely repayment of loans, and maintenance of proper books of accounts, among others.
So the next topic is exercise Cutlass Express. This topic is important for your security section. So INS Tir, which is the lead ship of the first training squadron, has recently participated in exercise Cutlass Express, which is held at which was held at um, Port Victoria in Seychelles. So it's an exercise conducted in East African coastal regions and the West Indian Ocean to counter malign influence, aggression, and activity along overlapping command. And it's a premier multinational exercise, a maritime exercise, which is sponsored by the US Africa Command, led by US Naval Forces of Europe, Africa, and Sixth Fleet. Um, so it brings together maritime forces from East Africa, West Indian Ocean region, Europe, North America, and several other international organizations so as to enhance maritime law enforcement capacity, promote national and regional security, and increase interoperability among the participating members. So, as part of the Cutlass Express 2024, Indian Navy has actively engaged with the participants from 16 friendly foreign countries, and Indian Navy has been participating in these exercises since 2019. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.